Hey guys, welcome to our new channel Error Math and to the first video on Error Math. So in this channel we are going to study, solve, understand all the concepts of all the chapters of 12th Mathematics CBSE NCERT. So as you can see, we are starting with our very first chapter, Matrices. This is our chapter guide. This chapter guide will help us to know on which topic we are. So today we are going to see introduction about matrices and what matrix is, then the order of a matrix, then types of matrices, and then equality of matrices. So let's move with the introduction of matrices. Now before going into what matrices is mathematically, we will look at where matrices is used. Matrices के मेथड को हम लोग यूज करते हैं टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. सो व्हाट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज बेसिक हमारे टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स एंड सो ऑन. So matrices is nothing but and it is an easy method to solve the system of linear equations. हमने देखा है इसे हम सब्स्टिट्यूशन के मेथड से, एलिमिनेशन के मेथड से 2 वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशंस हम सॉल्व करते हैं. बट इफ मोर देन 3 वेरिएबल्स अगर आते हैं कोई प्रॉब्लम में, कोई डेटा में, सो वी फाइंड इट क्वाइट डिफिकल्ट टू सॉल्व. So these kind of system of linear equations with many variables can be solved by using matrices or matrix method. So अब ये evolve हो चुका है. पहले हम सिर्फ system of linear equations को solve करने के लिए matrices use किया करते थे, but अब matrices की application काफ़ी wide हो चुकी है. It is used in engineering calculations, in budgeting, in sales projections, industrial management. So all the is represented in matrix form. So हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि किस तरीके से हम कोई भी एक डेटा को एक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं और क्या मैट्रिक्स का एक रिप्रेजेंटेशन होता है. Let us take an example where our friend Ed has 15 notebooks and 6 pens written inside this square brackets in this manner. Also his two friends Eddie and Edward has also same positions of notebooks and some pens. So in total Ed has 15 notebooks, 6 pens, Eddie has 10 notebooks, 2 pens and Edward has 13 notebooks and 5 pens. So अब इसको सिंपली वे में अगर हम लोग इंटरप्रेट करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा. नंबर ऑफ नोटबुक्स पोजेस्ड बाय एड, एडी एंड एडवर्ड and also number of pens possessed by them. So इसको हम लोग matrix में कैसे represent करेंगे? So representation of a matrix is very easy to understand. We denote matrix alphabetically by any capital letter. जैसे यहाँ पे इसको हम denote करेंगे capital A से, and the numbers are written inside these square brackets. तो ये जो numbers का arrangement होता है, it is arranged row wise and column wise. So here horizontal arrangement are called rows. So here you can see there are 3 rows, row 1, row 2, row 3, और इसको हम लोग R1, R2, R3 भी बोलते हैं. And vertical arrangement is the column arrangement. जैसे कि यहाँ पे 2 कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2 और C1 एंड C2. तो अब इसको रीड कैसे करना है? जैसे हमने ऊपर देखा एड के पोजिशंस थे नोटबुक्स के 15 एंड पेन के 6. तो यहाँ पे जो कॉलम 1 है ये सबके नोटबुक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम 2 सबके पेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड रो 1 इज द पोजीशन ऑफ एड, रो 2 इज पोजीशन ऑफ एडी एंड रो 3 इज द पोजीशन ऑफ एडवर्ड. सो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट एनी मैट्रिक्स. अब यहाँ पे जो नंबर्स है 15, 6, 10, 2, 13, 5 ये सब डेटा से हमने कलेक्ट किया है और इस नंबर्स को हम एंट्रीज या फिर एलिमेंट्स भी बोलते हैं कोई मैट्रिक्स का. सो दिस इज अ बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी मैट्रिक्स. पॉज द वीडियो टू नोट दिस डाउन. तो अब हम इसकी एक्चुअल मैट्रिक्स की मैथमेटिकल डेफिनेशन देखते हैं. सो अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस. सो द नंबर्स और द फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स. जैसे कि मैंने बताया मैट्रिक्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं एंड द अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स और फंक्शंस आर रो वाइज एंड कॉलम वाइज. सो हियर आर सम एग्जांपल्स. दिस इज मैट्रिक्स A of having 6 elements arranged in row wise and column wise. This is matrix B and this matrix C contains algebraic function and trigonometric functions. तो functions भी हम एक matrix में put कर सकते हैं. So this is what a matrix is. So a matrix is nothing but an ordered rectangular array of numbers or functions. ठीक है? Pause the video to note this down. So the next part is order of a matrix. तो हमने देखा कि एक मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं एंड द एलिमेंट्स आर रिटन विद इन दीज स्क्वायर ब्रैकेट्स. तो अब ये जो A11, A2, A13 ये जनरलाइज्ड फॉर्म है मैट्रिसेस का. इन जनरलाइज्ड फॉर्म A इज द एलिमेंट्स, स्मॉल लेटर A इज द एलिमेंट्स एंड यहाँ पे जो 1, 1, 1, 2 देख रहे हो ये पोजीशन है उस एलिमेंट का. जैसे कि जो फर्स्ट डिजिट है, जो फर्स्ट प्लेस है, इट रिप्रेजेंट्स रो ऑफ एनी एलिमेंट.
जैसे कि ये फर्स्ट रो में तो A1 एंड द सेकंड वन हियर द सेकंड प्लेस इज द कॉलम ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, इट रिप्रेजेंट द कॉलम ऑफ द एलिमेंट। जैसे कि यहाँ पर है A11, A12, A13, this is the elements of first row and first column, second column, third column. Similarly, A21, second row, first element. So this is the position of the elements presented in the matrix by row and column. So order of a matrix क्या होता है? Order of a matrix is nothing but a matrix having total number of rows and total number of columns. ठीक है, इस कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m क्रॉस n, और सिंपली हम लोग इसे m बाय n बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ कॉलम, या फिर m बाय n, ये ऑर्डर होता है एक मैट्रिक्स का। और इसको हम लोग लिखते हैं कॉर्नर में यहाँ पे ऐसे m क्रॉस n, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हमने देखा m और n क्या है, अब यहाँ पे I है एंड यहाँ पे j है, aij। सो aij इज द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, अब कंफ्यूज मत हो जाना कि I और m भी रो रिप्रेजेंट कर रहा है। m इज द टोटल नंबर ऑफ रोज एंड n इज द टोटल नंबर ऑफ कॉलम, बट I and j आर द पोजीशन ऑफ ईच एलिमेंट लाइंग इन ith रो एंड jth कॉलम। जैसे कि इफ आई एम टेलिंग दैट a23, so I is equals to 2 and j is equals to 3 here. This element is lying in row 2 and column 3. The ith row consists of the elements I1, I2 up to Im, because m is the total number of row, and the jth column consists of elements A1j, A2j, A3j up to Anj. So finally, in general, if we are talking, so Aij is nothing but an element lying in ith row and jth column. अब इसमें और चीज एक आती है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं मैट्रिक्स में, ये हमें कैसे पता चलेगा? हमें सिंपली ये जो ऑर्डर है इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो टोटल नंबर ऑफ रो और टोटल नंबर ऑफ कॉलम के मल्टीप्लिकेशन से हमें पता चलेगा दैट हाउ मेनी टोटल एलिमेंट्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। सो एक एग्जांपल लेते हैं। इन मैट्रिक्स X हियर देयर आर 2 rows and 4 columns, so order of this matrix will be 2 by 4, as the total number of rows are 2 and total number of columns are 4, and the total number of elements will be 2 into 4, which is 8. So there are 8 elements. So this is about the order of matrix and the general representation of a matrix. तो हम elements को represent आगे ऐसे ही करेंगे, A11, A12 उसकी position जानने के लिए। तो pause the video to note this down. इस पे हम लोग एक सम सॉल्व करते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। सो द क्वेश्चन इज टू कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स whose elements are given by aij is equals to 1/2 to mod of I minus 3j। तो अब यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसका ऑर्डर है 3/2, मीन्स 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, एंड इसके एलिमेंट का इक्वेशन है aij is equals to हाफ इंटू द मॉड I minus 3j। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रोज 3 है, सो द वैल्यू ऑफ ith row will be 1, 2 and 3, and jth column will be 1 and 2, and this is what the general representation of 3x2 matrix looks like। यहाँ पे elements के position है A11 first row first column, A12 first row second column, similarly A21, A22 and A31 and A32। so हमें इनके values find करने हैं, इन elements के value place करना है इसी position में। so for the first element, first row and first column, we will simply substitute aij as A11, which is I is equals to 1 and j is equals to 1। so here A11 is equals to half into mod of 1 minus 3 into 1, which is 1 minus 3, which is minus 2, and coming out of mod minus 2 becomes plus 2. 2 divided by 2 becomes 1. Like this for A12, I is equals to 1 and j is equals to 2, half into mod of 1 minus 6. So which is minus 5, and coming out of the modulus sign it becomes 5 by 2. So similarly for A21 also the answer will be 1 by 2, substituting I is equals to 2 and j is equals to 1. For A22 it will be 2. For A31 the answer will be 0, because I is equals to 3 and j is equals to 1, so 3 minus 3 will be equal to 0. And the last element A32, I is equals to 3 and j is equals to 2, so 3 minus 6 becomes minus 3, and coming out of mod it becomes plus 3, which is 3 by 2. So ये सारे elements हमने find कर लिए। So अब the required matrix is given by A is equals to substituting all the elements in their position. So for A11 first row first column 1, 5 by 2. Similarly for second row first column 1 by 2, and second row second column it is 2. Third row first column it is 0, and the final element
of third row and second column is 3 by 2. So this is our required matrix. Pause the video to note this down. So I hope you understand this concept of order of matrix and the representation of matrix, how an element is represented. So moving further now for the types of matrices. So these are the types of matrices: column matrix, row matrix, rectangular matrix, square matrix, diagonal matrix, scalar matrix, identity and zero matrix. So we are going to see all these matrix in detail now. So before that, riddle of the day. So the riddle of the day says that a doctor gives you 5 pills and tells you to take one every 30 minutes. So how long it takes you to finish the doctor's order? So this riddle is nothing to do with this chapter matrices. It's just a random riddle. So think about this riddle and write the answer in the comment section. So moving further, for the first type of matrix, which is a column matrix. So as the name suggests, column matrix, इसका मतलब अ मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक कॉलम है उसे हम उस कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं. सो फॉर एग्जांपल हियर मैट्रिक्स ए, यहाँ पर 4 रोज है और ए सिर्फ एक कॉलम है. सो द ऑर्डर ऑफ दिस बिकम्स रो इनटू कॉलम विच इज 4 into 1, 4 by 1 matrix. And in general this kind of matrix is having order of m by 1 because the value of n will always be 1. So pause the video to note this down. Next comes the row matrix. So as column matrix, row matrix is same. It has only one row and many columns here. So this is the example for it. And in general, this row matrix has order of 1 by n because there is only one row. So m is equals to 1 and many columns. So 1 into n is the order. You can pause the video to note this down. And next comes the rectangular matrix. So a rectangular matrix, as the name suggests, the shape of the elements that will be positioned in a rectangular manner. So a matrix in which the number of rows are not equal to the number of columns is said to be a rectangular matrix. So where the total number of rows is not equal to the total number of column, m is not equal to m. For example, here x is equals to a matrix is given. It is in the order of 2 by 4 where 2 is not equal to 4, which is m not equal to n. So in general, matrix A is a rectangular matrix of order m by n if m is not equal to n. So in this हमने ऊपर देखा column matrix. So column matrix is also a rectangular matrix. Same for row matrix. It has only one row and many columns. So you can pause to note this down. Moving for the square matrix. So यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. अगर हमारा ऑर्डर इस तरह होता है, सो दैट मैट्रिक्स इज नोन एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स where m is equal to n. For example, like this. So here there are 3 rows and 3 columns. So the order of this matrix is 3 by 3, or simply we can say 3. So in general, this kind of matrix has order directly m or n because the number of columns and rows are same. So this is a square matrix. You can pause the video to note this down. Moving further for the diagonal matrix. Now diagonal matrix is a square matrix which is having elements only diagonally and the non-diagonal elements are 0. So this is a diagonal matrix. For example, you can see here B matrix, it has only diagonal elements and all the other elements are 0. In matrix C, it is a square matrix, only diagonal elements has numbers and all the other than diagonal are 0. So why only this diagonal has the numbers? Why not this diagonal? So for that we'll see the definition. B is a matrix, a square matrix. It is said to be a diagonal if Bij is equals to 0 when I is not equal to j. That means for this element it is a11. So a11 that means I is equals to j है यहाँ पे. इसका वैल्यू 0 नहीं होगा, इसका वैल्यू 0 नहीं होगा. For this element a12, यहाँ पे I का वैल्यू 1 है, 1 row and second column. यहाँ पे I is not equal to j, so this element will be 0. And for this kind of diagonal element which is a13, first row, third column, here also I is not equal to j. So only for these elements, this diagonal, this is a11, this is a22 and this is a33 where I is equals to j. तो सिर्फ इनका वैल्यूज होगा, बाकी सब वैल्यूज होंगे 0 because these all are non-diagonal. So this is what diagonal matrix is. इसका भी order same as square matrix होता है which is 1, 2 and 3 respectively for this example. We can pause the video to note this down. Now next comes the scalar matrix. Scalar matrix is a square matrix and a diagonal matrix also, but the diagonal elements are all equal here. A diagonal matrix is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal. So that means, for example, हम देखें A is equals to 3, B is equals to diagonal element is -1, -1 and C is equals to it is
diagonal elements are root 3, root 3 and root 3. So scalar matrix क्या होता है? All the diagonal elements are same. This is a scalar matrix, which is a square matrix and a diagonal matrix also, but the diagonal elements are all same. अब इसकी definition में a scalar matrix if bij is equals to 0 when I is not equal to j, this is we know this for a non-diagonal element, and bij is equals to k where k is a constant when I is equals to j, that means for diagonal. अब इस ऑर्डर भी इसका सेम होगा जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स में था 1, 2 and 3 respectively for this example. So you can pause this video to note this down. So next comes the important matrix which is identity matrix. अब यहाँ पे identity matrix एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी है, बट यहाँ पे सारे डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू विल बी 1 ओनली. ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट्स की वैल्यू होगी 0. सो दिस इज नोन एज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका अगर जनरल फॉर्म हम देखेंगे aij विल बी इक्वल टू 1 फॉर I is equals to j which is diagonal element and 0 for I is not equal to j which is non-diagonal elements. So for example, identity matrix is here 1, 1, 0, 0, 1, and for order of 3 matrix it is like this. So this is identity matrix of order 1, 2 and 3. We denote the identity matrix of order n by I. So हम next line में लिखा है that a scalar matrix is an identity matrix when k is equals to 1. So this is what identity matrix is. You can pause this video to note this down. So moving further for zero matrix. So as the name suggests, zero matrix, all the elements will be equal to 0 and it is also known as a null matrix. So इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते because it is very clear that what a zero matrix is. Moving further for the next topic which is equality of matrices or equality of two matrix. So as we do equality of linear equations, so उसी तरह यहाँ पे equality of matrices भी होता है. अब यहाँ पे two matrix A and B are said to be equal. So first condition is they are of the same order. दोनों भी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए. एंड द सेकंड कंडीशन इज दैट ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A मस्ट बी इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स B. दैट इज every element like aij must be equal to bij for all I and j, for all the elements of rows and columns in their respective manner. So for example like this, a matrix A and matrix B, इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसका ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 है, एंड ईच एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट. 2 is equals to 2, 3, 0 and 1 all must be equal to each other correspondingly. So second example हम देखते हैं. In this matrix there are unknowns and in the corresponding matrix there is value, and the order of this matrix is 3 by 2. Same here, this is 3 by 2 which satisfies the first condition, and for second condition each element should be equal to corresponding. So the value of x is 1.5, y is 0, z is 2, a is root 6, b is 3 and c is equals to 2. So this is what equality of matrices is. ये काफ़ी सिंपल है, इसमें कुछ आपको उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. अभी तो हम लोग matrices के मेन चैप्टर में गए नहीं है, ये तो आपको कोई एग्जाम में पूछेंगे नहीं. दिस इज द बेसिक ऑफ द चैप्टर. ये सारी बेसिक चीज़ें आपको चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग के लिए. सो गाइज, दिस वाज आवर लास्ट टॉपिक. वी विल नाउ क्विकली रिवाइज व्हाट वी स्टडीड इन दिस वीडियो. यू कैन राइट दिस समरी एज शॉर्ट नोट. First we have seen a matrix. क्या होता है matrix? It is an ordered rectangular array of numbers or function which is represented in square brackets. Next हमने देखा order of a matrix, the total number of rows by the total number of column, उसे हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m क्रॉस n और m बाय n. नेक्स्ट हमने देखा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. पहला टाइप हमने देखा कॉलम मैट्रिक्स जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल कॉलम होती है. देन नेक्स्ट हमने देखा रो मैट्रिक्स जहाँ पे एक सिंगल रो होती है. देन वी सॉ स्क्वायर मैट्रिक्स जहाँ पे m इज इक्वल टू n, द टोटल नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ कॉलम होता है, हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं. देन डायगोनल मैट्रिक्स जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है बट द डायगोनल एलिमेंट्स आर गिवन एंड ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स व्हिच इज i नॉट इक्वल टू j आर 0. नेक्स्ट हमने देखा स्केलर मैट्रिक्स जहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है बट उसके डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल. A इज अ स्केलर मैट्रिक्स इफ aij इज इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू j which is नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 and aij इज इक्वल टू k where k is some constant when i is equal to j, that means for diagonal एलिमेंट्स. नेक्स्ट हमने इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स देखा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था जहाँ पे सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल I से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को. देन हमने देखा नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं. लास्ट वी हैव सीन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स. Two matrix A and B are said to be equal on two conditions.
First condition is दोनों का order same होना चाहिए, A और B का. And the next condition is each and every element must be equal to the corresponding element of the next matrix, which is Aij must be equal to Bij for all the possible values of I and j in their respective row and columns. So guys, this is what we have seen in this video. So guys, you can note this quick summary for your reference as short notes. So in the next video, we are going to solve exercise 3.1 based on these topics. And if you are new to this channel, don't forget to subscribe and press the bell icon to get notified for our every new video. So thank you guys. Till then, revise these topics and see you in the next video.